Hi and welcome to this video. And today's topic is how do I become confident? I think a topic which is so much relevant to the topic, which is or to the thing that when you have an unhealthy relationship with yourself. And if you're new here, let me just tell you that I am a trained life coach, and my work mainly revolves around helping somebody who has or who shares an unhealthy relationship with themselves. And when I say unhealthy relationship with yourself, what I usually means is that when you do not feel comfortable being yourself, or when you don't feel secure in yourself, or जब मैं secure word use करती हूँ तो it is nothing but confident. ठीक है? So when you do not feel comfortable, confident being yourself in your body, or there's a wish that I want to be somebody else because I don't like my life, because I don't like myself. So when you are in this position where you don't like yourself, where you don't like the person that you are, you don't feel confident in yourself, you feel a lot of fear of judgment, self-conscious, all of this. So I help you, or I help people go from this point to a point where you feel confident, where you feel comfortable being in your own skin, where you understand yourself. So instead of judging yourself, instead of hating on yourself, instead of disliking yourself, you understand yourself, you like the person that you are, and you finally start to feel comfortable, and feel comfortable and confident in your own self, where you also truly believe that you are worthy of love and respect and acceptance for your own self. All right. So और ये जो आज का टॉपिक है ना, that how do I become confident. So I think I would say that when you are this person who shares an unhealthy relationship with themselves, this is something, ये उसका core part होता है. Because when I share an unhealthy relationship with my own self, when the way I think about my own self, when the way I think and feel about my own self is not good, is not healthy, is not desirable, confidence तो बिल्कुल दूर की बात, राइट. सो आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट इन माई ओन सेल्फ. हेंस वहां से एक क्वेश्चन आता है, और वहां से एक डिजायर आती है, व्हाट, हाउ डू आई बी कॉन्फिडेंट. बिकॉज सी, नो मैटर हु वी आर, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई शेयर विद माई सेल्फ, नो मैटर हाउ आई थिंक अबाउट माई ओन सेल्फ राइट नाउ इन माई बॉडी, भले मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुद को या नहीं, वेदर आई हेट माई सेल्फ और लव माई सेल्फ, दैट डजंट मैटर. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस वांट. वी ऑल वांट टू बी कॉन्फिडेंट. एंड व्हाई? बिकॉज आई थिंक कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज वेरी मच विजिबल. जैसे आजकल हम कहते हैं ना ऑरा, लाइक हाउ वी look at people, or how we define that कि उसका ऑरा बहुत वो है, and all of those things. So what is that? It is about confidence, right? So I think and I think when I say that a lot of us desire to be more confident, I think it mostly comes from a space that confidence is visible. That we want to have that personality, we want to look that way, we want to have that aura कि जब मैं आऊँ ना तो people look at me certain way, people respect me, मेरा एक वो I have that stand, I have that value into people's life, that is how people see me, that is how people treat me. And I think this is the space where we come from. So जब हम एक ऐसे इंसान हैं, when I am the person who does not think and feel good about themselves, when I am myself suffering within my own self, like no matter how I am being outside, मैं दूसरे लोगों के साथ कैसे बात करती हूँ, it does not matter how my relationship with themselves is. If I suffer with my own relationship with my own self, I would have this desire that oh, I want to be confident, but from what space? So that other people respect me, so that other people look at me in a powerful way, so that other people think that I'm powerful, I can do things, I'm worthy enough. Because deep within मेरे अंदर क्या है? Because I don't think that I'm worthy enough. और जब मैंने कहा था ना, when we lack something, we will look for it. When I lack something, I will look for it. But because I already have a confirmation that it can never come from me, or I don't have it, I'm going to look for it outside. I'm going to look at other people to give it to me. So यहाँ पर भी जब हमारी desire होती है, how do I be confident? ये यहाँ से आती है ना, that I want other people to look at me certain way. I want other people to think good of me. I want other people to think that I'm worthy enough. I'm so valuable. So even though ये question उस space से आ रहा है, इस question का इंटेंशन या फिर एंड गोल वो है दैट आई वॉन्ट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट मी मोर, टू लुक एट मी दिस वे, टू नॉट जज मी, टू थिंक गुड ऑफ मी. बट एक क्वेश्चन होता है, द फैक्ट रिमेन्स दैट when I share an unhealthy relationship with my own self, one major question that comes to my mind is how do I be confident. ठीक है, मैं that I want to be confident in my own self, I want to feel confidence. बट एक तो ये क्वेश्चन होता है, और आज हम सिर्फ इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट द हाउ पार्ट. एंड आई एम श्योर जब बात कॉन्फिडेंस की आती है, there are endless videos out there. I myself have watched tons of them. When this was the hot question in my mind, when this was all I would think about, I have watched endless videos. बहुत सारे videos होंगे, and I'm not saying कि गलत है ये वो, but today this video is not going to be about tricks and tips, जो कि common, जो कि most of the times we talk about.
हियर आई एम गोइंग टू हेल्प यू रियली अंडरस्टैंड दैट हाउ डू आई एक्चुअली बिकम कॉन्फिडेंट. एंड यहाँ पे आई से मेरा मतलब है यू, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी स्पेसिफिक फॉर ईच वन ऑफ अस. एंड यू नो दैट इज वाई आई वुड से दैट जो ये जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, इट डज नॉट वर्क अदरवाइज. अभी आप गूगल खोल लो और आप सर्च कर लो हाउ डू आई बी कॉन्फिडेंट, अभी आ जाएंगी 5 थिंग्स टू डू टू बी कॉन्फिडेंट. यू नो वाई वी फेल एट इट, वाई इट डज नॉट वर्क फॉर ऑल ऑफ अस? Because the reason that I have lost my confidence at the first place, that is more important than reaching this end goal. Okay, how do I be confident? So I'm going to consider all of it, the truth of it. Something that actually works, something that will give you something that will give you or change your perspective about confidence, and you will at least start to walk on the right path. At least आप वहाँ पे नहीं घूमते रह जाओगे, टिप्स एंड ट्रिक्स में ही कंफ्यूज नहीं रह जाओगे. Okay, so let's start. So here I am assuming that I am a person who does not share a healthy relationship with themselves. मतलब I don't think and feel good about my own self or good in my own self. So पहले हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, which is section A. तो सबसे पहले मैंने लिखा है what we think, which is how I operate usually, how most of us think usually when we do not have this awareness, when we do not know this class. ठीक है, तो after this class it would change. After this class we will not remain here, but until we have this awareness, until we know the truth, हम यहीं पर स्टक करके रह जाते हैं, हम यहीं पर टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करते रह जाते हैं. and then we start even questioning ourselves कि मैं क्यों नहीं हूँ कॉन्फिडेंट, प्रॉब्लम मुझ में ही कुछ है. and then that is why it's so important to be aware of what is actually happening, what's the real truth. So let's first discuss what we think, how most of us operate. So when I am a person who does not share a healthy relationship with themselves, मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस ये है. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज समवेयर आउटसाइड ऑफ मी. कॉन्फिडेंस को एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बाहर पड़ा हुआ है कहीं. ठीक है, अभी कहीं भी पड़ा हुआ है. बस द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट्स आउटसाइड ऑफ मी. मैं ये हूँ और ये कॉन्फिडेंस है. ठीक है, और कॉन्फिडेंस कहीं रखी हुई चीज है, कोई बाहर है, एंड आई हैव टू गेट इट, आई हैव टू गो टू इट, और आई हैव टू ब्रिंग इट टू मी. मतलब आई हैव टू फेच दिस कॉन्फिडेंस एंड और आई हैव टू कैच दिस कॉन्फिडेंस एंड होल्ड इट विद माई सेल्फ. तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा. अब जब हम सोचते हैं कि जब हम देख रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझ में बाहर है, एंड व्हाई आई स्टार्ट टू सी कॉन्फिडेंस एज सेपरेट फ्रॉम मी, बिकॉज आई हैव एन अनहेल्दी रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, बिकॉज द वे आई थिंक एंड फील अबाउट माई सेल्फ इज बैड, इज अनहेल्दी. तो कॉन्फिडेंस मेरे लिए एक बाहर की चीज आती है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी बाहर की चीज है जो जब मेरे पास आ जाएगी, थिंग्स विल चेंज ड्रामेटिकली, माई लाइफ विल चेंज, पीपल विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट मी मोर, पीपल विल स्टार्ट टू लुक एट मी डिफरेंटली, आई विल जस्ट स्विच फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन अ डे. बस कॉन्फिडेंस की कमी है, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे पास, हमें ऐसा लगता है. सो ना अब क्योंकि हमें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कहीं बाहर है, तो अब मेरा माइंड सॉल्व करेगा कि हाउ डू आई गेट दिस कॉन्फिडेंस, क्या तरीका है. अब बिकॉज ऑफ वॉट वी सी, हाउ वी कंज्यूम आवर वर्ल्ड, द मूवीज, वो जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसके थ्रू हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या बनता है, दैट टू हैव दिस कॉन्फिडेंस आई नीड टू बी परफेक्ट. मतलब व्हाट आर द वेज टू गेट दिस कॉन्फिडेंस और टू फेच दिस कॉन्फिडेंस. मतलब मेरे पास क्या रास्ते हैं इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए. फर्स्ट, आई हैव टू बी परफेक्ट. अगर मैं परफेक्ट हो जाऊं तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. सेकंड, आई हैव टू बी रिच, और आई हैव टू बी रिच मतलब आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ओनली देन आई विल बी कॉन्फिडेंट. और आई नीड टू बी एट अ प्लेस वेयर आई मेक नो मिस्टेक, मतलब आई नीड टू बी परफेक्ट टू दैट लेवल जहां पे मुझसे कोई गलती ना हो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर. और एक क्या है, गुड लुकिंग. आई नीड टू बी गुड लुकिंग, तभी कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा मैं. लास्ट, ऑब्जेक्ट यानी मे बी इट्स अ फोन, एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, फोन, अ जॉब, अ पर्सन, एनीथिंग, राइट, एनीथिंग. So here what is happening actually is that I start to feel that there's something outside of me that once I have, so rich, money, any object, any materialistic thing, a job, a person, or a phone, an object, perfection, me not making any mistake, the flawless banna, or me good looking, good looks, something that's totally out of my control. So I start relating to confidence through these external things. तो मेरे माइंड में बन जाता है that okay, for me to be confident, I need to be perfect, I need to be making a lot of money, I need to have some expensive objects like iPhones and all of those things, or I need to be flawless, I cannot make any mistake if I want to be confident, and I need to be good looking. अगर मैं good looking होगा, हाँ, तभी मैं confident feel करूंगा. So this is how I start to look at कॉन्फिडेंस. ठीक है, ये हमारा नजरिया हो जाता है. एज द रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट कीप्स हैपनिंग, अब मुझे पता है कि अच्छा ये कॉन्फिडेंस है, ये चाहिए मुझे, एंड दीज आर द वेज. सो व्हाट विल आई स्टार्ट डूइंग, आई विल स्टार्ट चेजिंग दिस थिंग, एनी ऑफ दीज थिंग्स. कोई भी एक चीज मैं चूज करूंगा कि हाँ, आई कैन गो आफ्टर दिस थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है समथिंग एक्सटर्नल, अगेन द सेम थिंग. So what will happen, I will start chasing one of these things, या फिर all of these things, या फिर any two of these things, which is again something that is outside of me. मैं क्या करूँ फिर, again I'm chasing something that is out of me, that is again outside of my body, and because I believe
the moment I achieve this thing, the moment I achieve any of these things, the moment I become perfect, the moment I become rich, or the moment I have possession of an expensive object, or the moment I become a flawless person who never makes mistakes, or the moment I start to look good, better, I will get what? Confidence. मेरे पास confidence आ जाएगा. So this is how most of us operate when we do not have awareness, when we do not know the thing. This is how we start to look at things, और ये हमारा default setting होता है. This is how we, I mean, when we just become aware of this thing that, okay, you know what, I want to be confident. This is how we start to look at things, by looking at our external environment. You know why? Because when we look at confident people or people who we consider confident, we start to form views that ये मतलब ये इंसान, इस इंसान के पास इतने पैसे हैं, ये बहुत ही परफेक्ट है. We start to look at them like that. In reality, जब reality पता क्या होता है? Because somebody is confident, they, I mean, you start to, मतलब the kind of energy that they radiate, it in your eyes, they start to seem perfect to you. But in reality, nobody is perfect. Even they don't think that they are perfect, but they have accepted themselves as they are, and they are perfect for themselves. तो उनका जो perfect का definition है ना, वो खुद ही है. तो उन्होंने जो अपने लिए perfect वाली definition रखी है ना, वो है वो कि हाँ, I am perfect just the way I am. So that is why when you look at them, you start to feel that they are perfect. Because in reality, they are radiating that energy, क्योंकि वो खुद ही वो feel करते हैं. So what's the difference? वो जैसे भी हैं, उन्होंने खुद को accept किया. They have told themselves repeatedly that I am perfect just the way I am. And now when they think and believe that way, उनका relationship कैसा है खुद के साथ? Healthy, very loving, very respectful relationship that they have with themselves. And the moment they have good relationship with themselves, confidence become natural. They radiate it. तो आप जब उसको अब आप जब दूर से उसको देखोगे तो आपको लगेगा यार ये इंसान तो बहुत कॉन्फिडेंट है, और आपको लगेगा ये कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि परफेक्ट है. क्यों? और आपको वो इंसान परफेक्ट क्यों लग रहा है? बिकॉज वो इंसान वहां से ऑपरेट कर रहा है. बिकॉज दैट पर्सन ट्रूली बिलीव दैट आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम. पर हमें उसका इंटरनल नहीं पता है. वी थिंक वो इंसान परफेक्ट पहले था, दैट इज वाई ही इज कॉन्फिडेंट. बट इन रियलिटी वो इंसान पहले बट इन रियलिटी उस इंसान ने अपनी परफेक्ट डेफिनेशन खुद को दी है परफेक्शन की. दैट इज वाई ही अपीयर्स कॉन्फिडेंट टू मी एक्सटर्नली. तो यहाँ पर क्योंकि हमें जो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज करेंगे, अपना पर्सपेक्टिव यूज करेंगे, और इन सारी चीजों को चेज करना स्टार्ट करेंगे, थिंकिंग दैट इट विल गेट मी कॉन्फिडेंट. वन थिंग टू नोटिस हियर इज दैट यहाँ पर जो मेरा कॉन्फिडेंस को लेकर रिलेशनशिप है, और जो मेरा पर्सपेक्टिव है कॉन्फिडेंस को लेकर, और जो मैं चेज कर रहा हूँ, जो मैं ट्रिप्स मेथड यूज कर रहा हूँ टू गेन कॉन्फिडेंस और टू बिकम कॉन्फिडेंट, इट इज ऑल एक्सटर्नल ऑफ मी. सब चीज मेरे बाहर है. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट और चेज, इट्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर आउटसाइड ऑफ मी. तो मैं यहाँ पे इंटरनल कभी नहीं जा रहा हूँ. आई एम नेवर गोइंग डीप इन टू माई सेल्फ. आई एम नेवर आस्किंग माई सेल्फ सम क्वेश्चंस. आई एम नेवर diving deeper into, okay, if I have certain thoughts or if I don't feel confident, what do I feel? अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ तो where it is coming from? I'm not going inside internally. I'm not going I'm not becoming aware of, okay, what is happening inside me. I'm chasing external things. So everything is here external, मतलब we are chasing something that's outside of us. Because यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन ही है कि वो मेरे से बाहर है. It is outside of me. As a result of which क्या होता है, एक एंडलेस लूप बन जाता है. ये क्या है? ये एंडलेस लूप है. अगेन आई ड्रॉन हियर. यहाँ पे मैं हूँ ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट. यहाँ पर हमें जब व्हेन आई स्टार्ट चेजिंग समथिंग दैट इज एक्सटर्नल ऑफ मी, व्हाट आई फेस, आई एंड अप फेसिंग फेलियर. और या फिर मेरे को कुछ भी मिलेगा ना, इवन इफ आई मेक अ मिस्टेक, आई विल कंसीडर इट फेलियर एंड आई विल स्टॉप एट दैट. बिकॉज वाई? बिकॉज आई एम अंडर कॉन्फिडेंट. To be at a position where I'm able to achieve something, I need to have enough self-belief in me to keep going, right? To keep showing up. अगर मुझसे एक बार गलती हो भी गई, वो जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, छोटा सा फैक्टर, वो जो छोटा सा कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है, वो मुझे उतनी हिम्मत देता है दैट ओके आई कैन गो अगेन. सो इफ आई फेल्ड इन 2-3 इंटरव्यूज, दैट कॉन्फिडेंस फैक्टर जो मेरे अंदर होगा, इट विल गिव मी इनफ स्ट्रेंथ टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट वन आफ्टर प्रिपेयरिंग अगेन, आफ्टर वर्किंग ऑन माई मिस्टेक्स. बट इफ आई लैक दैट कॉन्फिडेंस, मतलब वो सेल्फ बिलीफ अगर नहीं है मेरे अंदर, इफ आई एम ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट, व्हाट विल हैपन? आई विल गिव 2-3 ट्रायल्स, फेल हो गया, आई विल मेक इट अबाउट माई सेल्फ. मेरे अंदर कुछ कमी है, आई एम द प्रॉब्लम, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई कैन नेवर डू इट. सो आई हैव मेड द कंक्लूजन. मतलब मेरे को फेलियर ही मिलना है. सो जो मैं चेज कर रहा हूँ ना एक्सटर्नली, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट, आई एम चेजिंग समथिंग आउट ऑफ मी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम गोइंग टू फेस फेलियर, एंड द मोमेंट आई फेस फेलियर, द मोमेंट आई कंक्लूड दैट आई फेल्ड हियर, व्हाट इज हैपनिंग? फेल्स टू अचीव थिंग्स एक्सटर्नली. मेरा क्या हो जाएगा? आई विल अगेन बिकम अ पर्सन हु इज इवन मोर अंडर कॉन्फिडेंट, एंड देन आई अगेन गो फॉर समथिंग, आई अगेन चेज समथिंग एक्सटर्नली थिंकिंग इट विल मेक मी कॉन्फिडेंट. I would again fail at it because I'm already under confident. So I lack that self belief that is needed for me to keep going on after something, to be able to be at a point where I achieve it.
Because see, when it comes to achieving something, we need that, relent. I mean, I would say that thing in ourselves to keep going for it. To not make mistakes about ourselves. कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मेरी वजह से इट मीन्स दैट आई एम नॉट गुड इनफ, हो ही नहीं पाएगा. वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमें इतनी हिम्मत देता है टू कीप गोइंग फॉर, बिकॉज वी बिलीव दैट आई एम ऑलवेज इम्प्रूविंग. इट इज नॉट अबाउट मी. मिस्टेक्स आर नेचुरल. इट हैपेंस. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड, which is in reality is a loop. ये loop बन जाता है. And that is why when we are this person, when we think this way, we actually reach nowhere. हम यहीं पर फंस के रह जाते हैं. Again, what happens? We are again this person. हमें confidence अभी भी चाहिए. But we have already tried and tested this method and it didn't work for us. We did try to go after something external, thinking it will get me confidence, but it failed. I am failing at it constantly. And अब जब ये बहुत बार होगा, when it keeps happening with me repeatedly, I would again start to question myself. I would again blame myself even more कि मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी. That is why I'm never able to be confident. I'm never able to become confident. Like I'm failing every time I'm trying to do something to be confident. So everything will become about myself. And then maybe I come to a point where I start questioning myself that why am I not confident and somebody else is confident so easily, so effortlessly. And इसका ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है that why am I not confident and somebody else, because we also observe other people, they seem to be so confident so easily, so naturally, so effortlessly. They don't seem to be working so hard for it. इस क्वेश्चन का आंसर सेपरेटली एक बहुत बड़ा है and I have made a video on that, so I will put the link in the description. It's I think titled why am I not confident, because when we are left with this question इसका आंसर नहीं आता है, I blame myself even further कि मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, और मे बी आई एम बॉर्न दिस वे, आई वॉज बॉर्न वीक एंड अंडर कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो if this is a question that haunts you or has been in you for a long time, do watch that video. A very very valuable one. So now this was what we think, something that definitely does not help us when we are when this is a hot question in our mind that okay, how do I become confident. Now let's have the reality check, wherein we are going to dive deeper into the reality, the truth of okay, how do I truly be confident, what needs to happen, and what's the reality, what do I do to truly become confident. So this is the reality, the truth. So वहां पर हमने जो देखा था, वहां पर मेन था कि मैं यहाँ पर हूँ तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर था, कॉन्फिडेंस कहीं बाहर था. यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन जो है, आई एम दिस पर्सन, और यहाँ पे मैंने मार्क करके लिखा है कॉन्फिडेंस इज इनसाइड मी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस. कॉन्फिडेंस हमेशा हमारे अंदर ही होता है. इट इज नॉट समथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ मी. एंड व्हेन दिस पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स विल चेंज, कि कॉन्फिडेंस कुछ बाहर नहीं पड़ा हुआ है ऐसे पत्थर की तरह, ईटा की तरह, ओ आई हैव टू गेट इट, आई हैव टू डू समथिंग टू, फर्स्ट आई हैव टू लोकेट इट एंड देन आई हैव टू गेट इट. You have to change this perspective. And what's a different perspective? What's the new perspective? Confidence is always inside me, and that is why confidence is an internal thing. So when we talk about okay, how do I become confident, we don't chase anything external. We don't look for answer outside. Where do we go? Because confidence is inside, and somehow we have lost it. Maybe suppose I want you to imagine it like you have a body, right? If I tell you that there's something that has been lost in your body, where will you look for it? Inside your body, right? आप अपनी बॉडी में ही ढूंढोगे ना, कि बाहर जाकर ढूंढने लग जाओगे कि नहीं कहीं और खो गया है. नो, it is inside your body, it is inside you only, but it has been lost, the location has been lost, I'm not able to trace it. So where will we be looking for? We will be scanning your body only, right? So we will be focused on your internals only. We will not leave your body and start searching for it outside, because we know that confidence is inside you. तो यहाँ पर भी वही फैक्टर है, confidence is always inside you, and that is why when we say how do I become confident, how do I get confident, how do I become confident, we don't look for it outside. That is why when we seek answers from outside, when we look at videos which tell us 5 tips or tricks, I'm not saying that those videos are wrong. वो कुछ लोगों के लिए काम करता है, but the case I'm talking about, where I'm assuming that we have an unhealthy relationship with our own selves, वहां पर जब कॉन्फिडेंस की बात होती है तो टिप्स एंड ट्रिक्स डोंट वर्क, बिकॉज वहां पर वो जो फैक्ट है that okay, why do I lack confidence at the first place, उसका जो रीजन होता है, it is important to dive to explore that reason first, because as I said, confidence हमेशा अंदर होता है. It is just that we have lost it, या फिर it is just that something else has covered it, something has come over it and suppressed it, and that is the reality. And that is why यहाँ पर जब हम कोई टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करते हैं, when we try to find an answer through something that's outside of us, किसी और से आके पूछते हैं कि how do you become confident, what happened to you, वो अपना बता रहा है, वो अपना आंसर बता रहा है, और उसके लिए वो सही में काम किया होगा.
बट जरूरी नहीं है कि जो किसी और के लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करेगा, बिकॉज योर रीजन ऑफ वाई यू लैक कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस is going to be unique to you, is going to be different for you. So here, and this, this is something I'm truly believing, that all of us are born with confidence, right? Because what is confidence? Confidence is my authentic self, my acceptance for self. You will never see a baby hating themselves. You will never see a baby self-loathing themselves. Oh, I hate myself. No, a baby always loves themselves. In fact, as children we are often called narcissist, because we are very much self-obsessed. We want attention. We want people to pay attention to us only. And as a children, it is very normal to be narcissist. Growing up, our needs we get developed, our brain develops, and we turn into normal, healthy human beings. So meaning to say that, as children, I truly believe in that we are all born whole, perfect and complete. So confidence हमारे अंदर हमेशा होता है. What ends up happening is that, something happens in my life that makes me into a person who today lacks confidence, right? So something happens in between. So confidence natural था, मतलब confidence अभी भी अंदर है, but because of something that happened to me in my life, this confidence got lost, but it is still inside me. मेरे body के अंदर ही घूम गया है. I am not able to trace it, but it is still inside my body, right? And I was talking about, okay, what is confidence? So I said the first thing is my authentic self, the person that I am truly. First ये हो गया, right? So I need to know who I am, and I need to honor the person that I am. And second, my acceptance for self, to be in a position where I truly accept myself for who I am. See, because honestly, nobody is perfect. Nobody is perfect. Okay? And if somebody is pretending to be perfect, trust me, they are just faking it. They have their own internal issues that they're trying to cover up by gaining that validation from you, by making somebody else thinking that they are perfect. Nobody is perfect. It's all about, and the people who we think or who look very confident to us, people who we admire, people who we desire to be like, always look at them. The only difference is what makes them appear confident is, first is they are their authentic self, which means that they know who they are. मतलब वो खुद को जानते हैं अच्छे से. Second, they have accepted themselves for the person that they are. उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है खुद से. That अगर मैं एक इंसान को लूँ, suppose I have a person who's a very great artist, but they're not very good in academics, or when it comes to reading, writing and all these intellectual things, they're not very good at it, but very great artist. And art may a lot of things come, right? It's not just about painting. They're very good at art, like good artist, or maybe they're a very good chef. But so this person, they know their authentic self, right? वो खुद को जानते हैं अच्छे से, that what's my strongest point. Second, they've accepted themselves for who they are. They take pride for who they are. वो खुद को accept करते हैं that okay, this is something I'm good at, this is something I'm not so good at, but they're fine with it. But if I manipulate this person into thinking that what they're good at is not so important, instead they should have been good at something else, like something intellectual, उनको scientist होना चाहिए था, उनको ये पढ़ाई करनी चाहिए, all of those things, वो बंदा उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जीरो क्या लो नेगेटिव चला जाएगा. बिकॉज देन all that person would be thinking about is कि क्या हो गया मेरे साथ, so first is they would lose their confident self. अगर मैं ये मतलब if this happens, if I tell such a person that they are flawed, somehow they are flawed because उनके पास वो इंटेलेक्ट नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली अच्छे नहीं है, उनको साइंटिस्ट होना चाहिए था, ये आर्ट वार्ट मैटर नहीं करता, no matter how good they are at cooking or all of these things, it will never matter, it does not matter. First thing that will happen is they will lose their authentic self. But I'm assuming here that they're open to be manipulative, right? मतलब they are open to be manipulated. कोई कॉन्फिडेंट इंसान इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट. बट आई एम अज्यूमिंग दैट लेट्स अज्यूम दैट कि हम उन्हें मैनिपुलेट कर दें, राइट? तो फिर क्या होगा? फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज दे विल लूज देयर ऑथेंटिक सेल्फ. वो जो एक्चुअली में है उसका कनेक्शन उनसे टूट जाएगा, बिकॉज दे विल स्टार्ट डिसलाइकिंग देमसेल्व्स कि मैं जो हूँ गलत हूँ. उसको एक फीलिंग आ जाएगी, और द मोमेंट दिस फीलिंग कम्स इन दे विल स्टार्ट नॉट एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स, विच मीन्स दे विल स्टार्ट रिजेक्टिंग देमसेल्व्स. वो खुद को रिजेक्ट करने लग जाएंगे, वो खुद को एक ऐसी नजर से देखने लग जाएंगे विच इज अनहेल्दी. उनके थॉट्स क्या फ्लोट करेंगे माइंड में कॉन्स्टेंटली? आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट हाउ आई शुड बी. और फिर क्या आएगा? एक विश आएगा, ओ आई विश आई वॉज दैट वे. दे वुड स्टार्ट लुकिंग एट सम, सपोज दे वुड स्टार्ट लुकिंग एट आइंस्टीन कि यार ये कितना अच्छा था. मतलब द पर्सन दैट दे आर, दे वुड लीव दैट पर्सन. मतलब खुद को छोड़ के दे विल स्टार्ट चेजिंग समथिंग एक्सटर्नल, क्या मुझे इसकी तरह होना चाहिए था, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर ऑथेंटिक सेल्फ and they have stopped, they have rejected the person that they are. So what is confidence truly? My authentic self, the person that I am, my self awareness, and then my acceptance for self. And when we are babies, we have both of these things. हम इतने authentic self होते हैं, we don't care what anybody else thinks of us. We are free, we just don't care,
we feel so free to roam around naked. We don't care about anybody, and we accept ourselves. We are as children, we are just obsessed with ourselves. We want all the attention. So as children, we are always confident. We are born confident, right? But let's get on. Let's move ahead, and let's assume that growing up I developed an unhealthy relationship with myself, which means I lost the confidence. So let's look, how do I become confident? What needs to happen, or where is the confidence inside me, and how do I trace it back and claim it? So जब इसको जूम इन करते हैं हम, क्या हो रहा है? So confidence मेरे अंदर तो है, but there's something that's happening. जब हम इसको जूम इन करते हैं तो we see that ये जो कॉन्फिडेंस है मेरा कोर में, राइट, सर्कल में, इसको जूम इन किया मैंने, उसके ऊपर कुछ और है. समथिंग हैज क्रश्ड दिस, और सप्रेशन वुड बी द बेटर वर्ड. सो कॉन्फिडेंस अभी भी वैसे ही है. सो दिस कॉन्फिडेंस थिंग जो है ना, हाँ, सो दिस ये जो कॉन्फिडेंस वाला चीज है, इट इज देयर इंटैक्ट, वो अभी भी वैसे ही है, बट उसके ऐसे इस तरफ ना कुछ हो गया है. लाइक समथिंग हैज कवर्ड इट, समथिंग हैज बीन रैप्ड अराउंड इट. कोई चीज आकर उस पर बैठ गई है, ऐसे सप्रेस्ड हो गया, बिकॉज ऑफ विच दिस कॉन्फिडेंस इज इनविजिबल टू अस नाउ, विच ऑल्सो मीन्स दैट वी कांट एक्सेस इट. अब नाउ लेट्स सी व्हाट हैज ओवरलैप्ड इट, मतलब इसके ऊपर क्या आके बैठ गया, विच इज अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स. और ये अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स कहाँ से आते हैं? एज आई सेड, वी डेवलप इट. तो कॉन्फिडेंस तो हम इसके साथ तो पैदा होते हैं, ये बाहर से आके लग गया. हाउ? बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद मी, और द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड, अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स ने आकर मेरे कॉन्फिडेंस जो कोर था उसको कवर कर दिया है, और अब कॉन्फिडेंस छिप गया है. एंड व्हाट इज विजिबल टू मी, व्हाट इज एक्सेसिबल टू मी, व्हाट इज ऑपरेटिव, वेयर, व्हाट स्पेस डू आई वर्क फ्रॉम? अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स. एंड व्हाट डज लैकिंग कॉन्फिडेंस मीन? That I do not believe in myself. I do not have that self-belief. I don't like the person that I am. I have no trust. और ये सब क्या है? ये सब है unhealthy self-beliefs. The way I look at myself. That I don't think I'm capable enough. I'm good enough. So confidence की जगह क्या भर गया है? अब मैं what is dominant in my system now? Unhealthy self-beliefs, which makes me feel small, inferior in myself, which makes me not believe in myself, which makes me feel like I'm powerless. I'm not good enough as compared to others. And when I think these things, when I have such unhealthy self-beliefs, when these beliefs keep floating in my mind all the time, if these are my dominant thoughts, I'm never going to feel confident. Instead, I'm going to feel ashamed of myself. I'm going to feel strong shame in myself. I'm going to feel like I'm not good enough. As a result of which, I'm going to hide. I'm not going to take up opportunities. I'm not going to express myself. I'm going to hide and play small. And I will genuinely think that other people are better than me. I'll start to feel inferior in my own self. Okay, all of these things happen. So right now, this is the truth. Confidence मेरे अंदर ही है, but वो भी unhealthy self belief से cover हो गया है. और यहाँ पे मैं लिखा confidence is suppressed by unhealthy beliefs. मतलब कुछ है जिसने cover कर दिया है, because of which I'm not able to trace that confidence. I'm not able to tap into my confidence. ठीक है. So मैंने यहाँ पे लिखा यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल. ये जो अनहेल्दी बिलीव्स है, ये जो अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स का जो लेयर है जो चढ़ा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल. मीनिंग इसे कहने का क्या मतलब है मेरा, कि सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू आई बिकम कॉन्फिडेंट, हाउ डू आई टैप इनटू दैट कॉन्फिडेंस, हाउ डू आई ट्रेस दिस कॉन्फिडेंस. जब बात आती है ट्रेस करने की, तो द ओनली वे इज दैट आई मेक वे थ्रू इट. मतलब आई रिजॉल्व दिस अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स. मतलब it's like I want you to imagine it like imagine that this is made up of bricks, right? Bricks या फिर मिट्टी कह लो, या फिर bricks. Let's just take bricks, right? ईंटे जो होते हैं, ईंटे से बने हुए हैं. So if you have to reach a core, and there's a layer made up of there's a outer wall, I would say, made of bricks. What would you do? You would literally damage. You would hit these bricks until they fall down, right? You will break this foundation until you reach that core of confidence, which is always there intact, waiting for you to tap into it. Similarly, जब हम कहते हैं ना कि I have to hit these bricks and break into it, damage it, right? How do we do that? We do that by exploring. यहाँ पर लिखा है मैंने, see. How do we do that? How do we how do we get through these unhealthy self beliefs and reach confidence? We have to erode this layer. मतलब हमें इस पूरी लेयर को हटाना है. And how do we do that? First, exploring the outer layer. हमें इसे explore करना है. ठीक है. फर्स्ट वी एक्सप्लोर दिस, सो वी डाइव डीपर इनटू इट. और ये सबके लिए यूनिक होता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल विल हैव सम यूनिक और डिफरेंट अनहेल्दी सेल्फ बिलीव्स. किसी के लिए होगा दैट आई एम नॉट गुड इनफ, दैट आई डोंट लुक गुड इनफ. किसी के लिए बहुत ही स्ट्रांग होगा थॉट, और इस एक थॉट से उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जा रहा है. और किसी के लिए होगा दैट आई एम नॉट केपेबल इनफ बिकॉज दिस पर्सन हैज फेस्ड सो मेनी फेलियर्स इन लाइफ. या फिर ग्रोइंग अप द वन थिंग दैट दे हैव बिलीव्ड with all their heart is that I can't do things right. Why? Because they were poked frequently as a child. They were criticized
एज अ चाइल्ड, और दे सॉ देमसेल्व्स मेकिंग मिस्टेक्स, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. तो उनका एक मेजर बिलीफ क्या होगा, दैट आई एम इनकेपेबल एज अ पर्सन. तो उनका सब मतलब सबका रीजन अलग होगा, सबका जो अनहेल्दी सेल्फ बिलीफ, डोमिनेंट सेल्फ बिलीफ होगा वो सबका डिफरेंट होगा, और सबका रीजन भी डिफरेंट होगा, दैट हाउ डिड दे कम टू डेवलप दैट वन अनहेल्दी सेल्फ बिलीफ. मीनिंग exploring this outer layer, so that or exploring this outer layer, going deep into this and uncovering, okay, that if I believe into something, if I truly believe that I'm incapable, what makes me believe into that? So here, going deeper into what and why, what is there, what is the outer layer. If I'm not confident, so if I'm not feeling good about my own self, what am I feeling? Bad. Okay, what is making me feel bad about my own self? The way I look, or my capability, my academics, my performance, my personality. There is always a reason, and this reason is unique for every individual. Until we explore this reason, until we process those emotions which are still inside us, the pain, the fear, the shame which is still inside us, no matter how many tricks and tips and tricks I apply, I implement, it will not bring me this core confidence which is needed, which is what I need to tap into, and it is I have all my rights to have it. It's always inside me. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया, exploring the outer layer, going deeper into what and why, which is always unique for every individual. That is why वो जो general tips and tricks होते हैं वो सबके लिए काम नहीं करते हैं, because what needs to happen is unique to everybody. For me it will be different. तो जब मैं अपने confidence पे काम करूँगी, so the things that I need to talk about, the things that I need to process, what and why will always be different than any other individual, for you or me. तो मेरे और आपके लिए different होगा वो reason. तो the way, like, so the path to confident for me and you will be different. वो वर्क डिफरेंट होगा. नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, रिजॉल्विंग माई अनहेल्पफुल बिलीफ. तो यहाँ पर जब मैं एक्सप्लोर करूंगी तो मुझे दिखेगा कि व्हाट इज वन बिलीफ विच इज वेरी डोमिनेंट. तो इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई ओन सेल्फ, व्हाट एम आई फीलिंग. तो वो जो बिलीफ है उसको रिजॉल्व करना, मतलब प्रोसेस करना. बिकॉज अभी क्या उसमें बहुत ही चार्ज है. आई समवेयर the fact that I don't feel confident today, and the fact that there's some unhealthy self belief which is dominant in me, it means that somewhere I truly believe into it right now, even today. That is why it has charge over me. That is why I don't feel good about myself. I don't feel good in myself. So what needs to happen? I need to resolve it so that I come to a point where I genuinely stop believing into it, where that one dominant, negative, unhelpful self-belief truly starts to lose its power over me. Matlab, I'm in a position where I truly start to believe that, what, I was never incapable. It was just that people around me were so critical. People around me were so quick to criticize me for everything. And because of that, I started to feel that, making mistake was wrong. So it's about coming to a point where you genuinely start to look at yourself, your life, your story differently. Because up until now, हमने कैसे देखा है that, okay, I was criticized so much, and it happened because I was not good enough as a child. I could not do things right. I always made mistakes. अभी तक मैं ये सोच रही हूँ. That is why I have this strong unhealthy self belief that I'm incapable, because of which I'm not confident. I cannot be confident. So working or resolving these how this question, that how do I be confident, how do we reach, what's the way. The thing is that I explore that belief that I have, that unhealthy or unhelpful belief that I have. I go deeper into it. I start to look at my own story differently. That is the way out. That it was not me. The problem was not me. So it's about changing, coming from a space where I genuinely believe that I am wrong, and that is why that is why I don't feel confident in myself. It's about coming to a point where you genuinely start to look at yourself and your life differently. That, what, it was not my mistake. It didn't happen because I was incapable. It happened because I happened to be around people who were so critical about me. So it's about coming to a point where I genuinely don't believe in my unhealthy self-beliefs, which when happens, when I stop believing into these unhealthy self-beliefs so much, when I process it, when I process the unprocessed emotions which are present here, which are so charged right now, when I truly stop believing into this, it would erode, it would fall down. And then what will I be left with? Confidence, which is natural to me. और confidence को मैंने यहाँ पे क्या definition दिया? My authentic self. The person that I am in real. The person that I am at my core. And then there will be acceptance for myself. I will accept myself. I will come to a point where I start to accept myself. I start to look at myself differently. And how do we do this? The how part. Exploring the outer layer. Going deeper into the what and why. It's about inner work. Inner work मतलब इनर वर्क का सिंपल डेफिनेशन क्या है? बाहर जाने के बजाय यू गो इनसाइड, डीपर इनसाइड यू. हाउ? थिंक एंड फील. इनर वर्क का सिंपल सा मतलब होता है यू
go deeper into yourself with the intention of exploring your thoughts and feelings. So what do? You work on your unhelpful thoughts and feelings, resolve it, process the unprocessed emotions, so that you are able, so that you come to a point where you start to think and feel better about your own self, and that is what inner work is about. All right. So I think so at the end, what I would say. So this question, the question is, how do I be confident? The answer is, you go inside you, right? You don't look for it outside. You go inside you. You explore your internals, like what's inside me, and how do you do that? Through inner work. You talk about what's inside you, bring out what's going inside you. All right. So if you want to do this work, if you want to be confident, or if you're just curious about it, if you want to explore, you want to help yourself, I welcome you to book your clarity call with me. I am a trained coach, and my first clarity calls are free right now. It's a very safe space where you can be yourself. You can bring out what's really within you, what really goes inside your mind and heart, so that we can do the inner work, and you finally come to know that, okay, what's the resolution for your problem, or how you can truly be confident in your own self. All right. So to book that call, all you have to do is just DM me session in my WhatsApp contact, and I will put the number in my description and comment. Just DM me session, and I will send you the meeting link, and I'll see you in the session. All right. Bye bye.